good morning. I am actually going for a shoot right now. I'm gonna show you guys how we shoot. We are going to Chandni Chowk. It's almost been 2 years and I used to do these when I started vlogging and 2-3 साल तक मैं कर रही थी. It's been 6 years that I've been vlogging and I'm gonna show you guys my makeup and everything, the outfit and everything. It's gonna be a great vlog. Please keep on watching, and if you haven't subscribed, subscribe to the channel right now and let's go and get ready. Also, I didn't sleep last night. We won't talk about that. Coffee will fix everything. Don't be like me, kids. Please sleep on time, and yeah, it's very necessary. Don't depend on caffeine. My face is so puffy right now, but that's okay. Let's go. मैं समझ ही नहीं आती, तुम तो ये समझते हो दूसरा बेवकूफ है जो तुम जा रहे हो. I tried both of the outfits and I think the blouse is really tight, but I'm still going to take this long and I'm gonna wear this first. It's so pretty. I'll show you once I wear it. This is my OOTN, all the colors combined, but सब घर पे ऐसे ही रहता है, so we won't judge anyone. Okay guys, so I've kept you here so that I can show you guys my makeup. मैं ज़्यादा detail में नहीं बताऊंगी because ऐसे boring नहीं बनाना है. I've used the Lakme 9 to 5 foundation and the MAC foundation. MAC is in NC35 and the Lakme one is W180 Warm Natural. मैंने लगा लिया है और मैंने इसको मिक्स कर लिया था इसके साथ COVERFX के ड्रॉप्स के साथ हाइलाइटर, सो ये हाइलाइटेड फेस लगेगा थोड़ा. आई एम शूटिंग इन द डे लाइट, सो आई नीड सम शाइन ऑन माई फेस एंड नेचुरल शाइन फ्रॉम विद इन. And then I am gonna conceal those under eyes. Okay guys, so I'm gonna use the TRUEMATCH L'Oreal concealer because I haven't slept. So I'm gonna highlight using the concealer. वैसे मेरा एक shade lighter नहीं लाई हूँ मैं, कल स्टूडियो में पड़ा मेकअप आके. But we're gonna make do with what we have here. Let's finish this up. Now I'm gonna bake. It's all gonna come together, guys. I promise. ज़्यादा baking हो गई आज. I'm gonna bronze my face till then. Okay guys, I am back. मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया, मैंने ब्रॉन्जर कर लिया है, मैंने हल्का बहुत ब्लश भी लगाया है. मैं दोबारा जाऊँगी ब्लश और लगाऊंगी. But I've used this palette DELANCI and I've used this shade on my lids and I'm gonna just make it more vibrant. I don't know, I was feeling purple today. मैंने mascara एक layer लगा लिया. अब I'm going to use the L'Oreal Lash Paradise. This mascara makes your lashes look unreal actually, but the only drawback is you can't take it off easily. Guys, for lipstick I have used this by MAC, A Girl's Got Needs, and then this one by Kat Von D, Lolita. Oh, I forgot the highlighter. I'm using Maybelline Molten Gold, best highlighter. I love it so much. We are ready. Let's go. Guys, this is the new thrill that I'm experiencing right now. I'm on a scooty. Man, इतना गंदा है. मैं कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ, सो रहा है आराम से. Guys, this is me. I look like a spy for some reason. मैं स्कूटी पे आई हूँ ये पहन के, तुझे पता है? Guys, quick update. We are on the rickshaw right now. हम जा रहे हैं आगे. हम एंट्री पे थे यहाँ पर चांदनी चौक से. हम जा रहे हैं स्पाइस मार्केट. तो अगर आप आ रहे हो, आपको रिक्शा या कुछ लेके जाना पड़ेगा. तो we're gonna go there and shoot. आज मैंने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्राई कर लिया है. स्कूटी, रिक्शा, कार. गाइज वी जस्ट गॉट डाउन. इतना टफ था उन स्टेयर से उतरना. मैं लहंगा पकड़ के, मैं बता नहीं सकती कैसे हम ऊपर गए हैं.
और इतना सब कुछ ना गीला गीला हो रहा था, सब कुछ इतनी मुश्किल से मुड़ गया, बट द शॉट्स आर रियली रियली नाइस. आई कीप देम हियर. गो फॉर द मानसिंग ऑन इंस्टाग्राम. और जैसे कि आप देख सकते हो, प्लान करे थे हम यहाँ भी शूट कर ले, बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है. थोड़ा लेट हो गया हम आते आते, बट वी गोना स्टिल फाइंड वन मोर स्पॉट एंड शूट देयर. आई वुड रियली लाइक टू गिव यू गाइज क्विक स्नीक पीक. मुझे आज हील्स डाल के आनी थी. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू गाइज.